I came to Lower Kohistan. I was very much impressed about the work done by the DHO and the team to extend the health services to affected population due to flood situation. And WHO has undertaken to renovate few healthcare facilities to ensure that people of this area get the essential health services. And also today we donated medicines required to extend the health services to the people, as well as water supply schemes have been restored in few healthcare facilities by WHO. And further, we have decided to support to establish labor room and if possible the IMOC services, the comprehensive IMOC services at THQ level. And WHO will remain committed to support the DHO and the team to ensure that people of flood affected areas in Lower Kohistan get the essential healthcare services. पहले तो मैं WHO कंट्री लीडर्स को और उसके स्टाफ को उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस सख्त वेदर में लोअर कोहिस्तान का विज़िट किया। WHO की तो ये बातें हम लोग अब अपनी सारी लाइफ में देखते हैं कि वो टेक्निकल सपोर्ट थी, लेकिन माशाल्लाह इस दफ़ा उनकी टीम ने न सिर्फ हमें टेक्निकल सपोर्ट किया बल्कि प्रैक्टिकली भी उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा फैसिलिटेशन की है। तो उनमें मैं डॉक्टर सैद आलम साहब का नाम ज़रूर लेना पसंद करूँगा कि उन्होंने अपने इस थोड़े से टेन्योर में आफ्टर द फ्लड बहुत ज़्यादा हमारे साथ हेल्प की है, स्पेशली वाटर सप्लाई स्कीम्स में जो हमारी डैमेज हो गई थी। इसी तरह वाटर एंड अपना वेस्ट मैनेजमेंट प्लान्स हम लोगों ने वो इस्टेब्लिश किए हैं हमारे THQ लेवल पे भी और BHU जिजाल में भी।